uh, we had started discussing about titration curves, and in that we had discussed about first two variety of curve. That is when we are trying to titrate a strong acid with a strong base, or strong base with a strong acid. Now, the next thing is we have to discuss the titration curve. We have to discuss the titration curve for the other variety of titrations, that is between weak acid as an analyte analyte in flask versus strong base as titrant in urate. The ideal curve in this case is going to look something like this. If it is going to be weak acid in flask, what is the initial pH? What is the initial pH we can expect? Will it be near to 0, or will it be closer to 7? Hello. If we have a weak acid, where can we expect our pH to start from? Will it be starting from closer to 0 or near to 7? It's a weak acid, so the chances of having pH very close to 0 is going to be nil. Okay? We are generally going to start away from 0 line. The 0 point say, yes, it will be closer to 7. At least we can say it is going to be away from uh, 0. Okay? Number one. Number two, तो इसका कर्व जो होता है इनिशियल कर्व, आई मीन इट्स गोइंग टू स्टार्ट सपोज फ्रॉम हियर. पिछले वाले दोनों केसेस में द स्टार्टिंग वाज क्वाइट स्ट्रेट स्टार्ट हो रहा था, स्ट्रेट एंड हो रहा था. एंड तो यहाँ पर भी स्ट्रेट ही रहेगा, बट ये स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है ना, दैट इज नेवर हॉरिजॉन्टल. ठीक है, इट हैज सम कर्वी नेचर. ठीक है, ये कुछ हमेशा इस तरीके से होता है. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? क्यों होता है इज व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन.
So the curve is going to look like this, and at equivalent point, uh, when we are adding the acid, sorry, the base, there is going to be formation of salt, and at point of neutralization, the acid or base दोनों एक दूसरे को neutralize करेंगे. The expected pH is going to be the expected pH will be uh, generally going to be higher than 7. That is in basic zone. Why is this? कि जब जैसे 50 ml मान लो 0.2 मोलर 0.2 मोलर मैंने एसिड ले रखा है फ्लास्क में और उसको टाइट्रेट करा है बेस से सेम मोलैरिटी का 50 ml इसका भी लगेगा. एंड ऑफ द डे सॉल्ट सॉल्यूशन जब बनेगा पूरा सॉल्ट तो इट विल बी 100 ml एंड सॉल्ट का कंसेंट्रेशन जो रहेगा वो 0.1 मोलर हो जाएगा. ठीक है. दिस इनटू दिस विल मेक 10 मिलीमोल और ये भी 10 मिलीमोल, दोनों का 10 मिलीमोल 10 मिलीमोल विल प्रोड्यूस 10 मिलीमोल ऑफ सॉल्ट. 100 ml हो जाएगा एंड उसको करेंगे डिवाइड तो वी आर गोइंग टू गेट 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट. ठीक है. अब ये सॉल्ट जो होगा ये वाटर में है डिसोसिएटेड रहेगा एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो होगा ना दैट विल स्टार्ट टेकिंग प्लेस. सो बेसिकली होगा क्या HA plus BOH will mix to make BA plus H2. Okay, and BA plus H2 is going to create sorry, base का hydrolysis नहीं होएगा because it is part of strong base. Acid, which is a weak acid, is something which is going to get hydrolyzed. So A minus will hydrolyze that as H2O, giving us sorry, HA plus OH minus. This is how it is going to hydrolyze. So this shows that when all HA has got converted into BA, the solution will become slightly basic. Okay? When all HA has got converted into BA after reaction with BOH, the solution will get converted into or will have basic nature. Are we able to understand ये वाला argument or not? All of us, are Yes. we able to understand this argument? मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा पूरा का पूरा तो हमारा सॉल्ट बनेगा और सॉल्ट का नेचर क्या होगा? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट है. इसका नेचर कैसा होगा? इट इज गोइंग टू बी अ बेसिक सॉल्ट. इज इट राइट? बेसिक सॉल्ट. और ये बेसिक सॉल्ट इन वाटर डिसॉल्व्ड है तो इट इज गोइंग टू हाइड्रोलाइज लाइक दिस. वी हैव सीन द हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट. बेसिक सॉल्ट is going to hydrolyze like this. A minus plus H2O is going to give us HA plus OH minus, and therefore at neutralization point, such titration will have pH greater than 7 or in the basic zone. ठीक है. तो generally इनका pH जो है that is going to lie somewhere over here in the basic zone. वैसे अगर कर्व से भी हम देखते हैं तो we are going to get the similar this. ठीक है. यहाँ से वेरिएशन चालू हुआ है, यहाँ पे लगभग खत्म हुआ है.
Is this okay? ये सार middle point पे नहीं है, but approximately है, and pH is going to be in this zone only. So this is our pH value of the titration, and so equivalence point इंडिकेटर जो होता है वो हमारा लगभग ये वाले पॉइंट को इंडिकेट करता है। इंडिकेटर हमारे इस पॉइंट को लार्जली इंडिकेट करता है इन सारे टाइट्रेशंस में। अच्छा, इक्विवेलेंस पॉइंट के अलावा when we are doing or when we are dealing with weak acid strong base या weak base strong acid titrations, there is one important there is one more important point which comes into picture, that is called half equivalence point. ठीक है, ये मान लो वॉल्यूम V2 है, तो एक वॉल्यूम यहाँ पर आएगा which is half the V2 का वॉल्यूम, V2 by 2। ठीक है, this V2 by 2 के करस्पॉन्डिंग जो pH होता है, we call that pH as half equivalent। हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट का नेचर कैसा होगा? So it's going to be, our solution is going to be, this is half equivalent point. Half equivalent. It is going to be uh, this pH is going to correspond to, explain, actually ये वाले पॉइंट का pH जो होता है ना, वो जो इस एसिड का pK होता है ना, उसी के बराबर होता है। This pH is nothing but equal to pK of the acid, weak acid। ठीक है, क्यों होगा? अगेन एक्सप्लेन। यहाँ पर हमारा सिस्टम जो है, इट इज बिहेविंग एज अ बफर। एक्चुअली इस जोन में द मोमेंट वी हैव एडेड सम बेस, सम स्ट्रॉन्ग बेस फ्रॉम देयर टू द न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, ठीक है, the moment we have added some base into the system and some acid has reacted with that base to produce some amount of salt, starting from there until the point of equivalence point, okay, or neutralization point, my system is going to behave as a buffer. It's going to behave as a buffer. Yani weak acid strong base titration या strong acid weak base titration, दोनों ही केस में starting from here till here, which equation are we going to use to find the pH? It is the equation of buffer which is going to help us in order to find the pH of the solution. Why? क्योंकि इस कंडीशन में यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में at any moment what we have in our flask is some unneutralized weak acid, right, plus some salt of this weak acid with a strong base,
that is you also have A minus. Some salt of weak acid with strong base, that is Ba, leading to A minus. So this is an ideal condition which we can say a buffer solution, a weak acid along with its salt with strong base is present in the flask, and this is the ideal constituent of a buffer, isn't it? So इस पूरे जोन का pH हमको कैसे मिलेगा? बफर सॉल्यूशन वाले इक्वेशन से, ठीक है ना? अब नेक्स्ट थिंग ये यहाँ पर ये जो कर्वी पार्ट है, इनिशियल कर्वी पार्ट, this is also attributed to that buffer nature of the solution, ठीक है? buffer nature of the solution को ये क्यों attributed है कि जब बहुत कम अमाउंट ऑफ बेस हमने ऐड किया हुआ है, जब बहुत कम अमाउंट ऑफ बेस ऐड किया हुआ है, ठीक है, तो एसिड विच हैज गॉट न्यूट्रलाइज्ड, ये वाले जोन में पर्टिकुलरली इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल इन नंबर, ठीक है, या मोल्स जो होंगे, moles of salt is going to be very small. That means the concentration of salt is going to be very small, ठीक है? अगर concentration of salt बहुत कम रहेगा तो extent of hydrolysis जो होगा वो ज्यादा होगा. Am I making sense? If concentration is very small, the extent of hydrolysis will be more. Am I making sense? Hello. Oswald's dilution law. ठीक है? If you are having any difficulty in understanding that, we can just get an idea from Oswald's dilution law. Lower the concentration, more will be the extent of happening, ठीक है, और extent of dissociation, right? So यहाँ पर भी जब बहुत ही कम अमाउंट में एसिड न्यूट्रलाइज हुआ होगा, यानी बहुत कम अमाउंट में सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ होगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे द सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस का एक्सटेंट जो होगा दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर, ठीक है? तो अभी क्या है, एसिड की वजह से वी हैव सर्टेन H प्लस इन द सॉल्यूशन, और इसके हाइड्रोलिसिस की वजह से कुछ OH माइनस आ गया, तो H plus and OH minus are going to interact together, and H plus का count जो है that will decrease than the normally expected. So basically weak acid के केस में हम expect कर रहे थे कि इतना हमको pH मिलेगा, but titrating solution, titrant जैसे ही हमने डाला ब्यूरेट से, हमारा pH स्टार्टिंग पॉइंट का क्या मिलेगा टाइट्रेशन की शुरुआत में, it will be slightly lower than what is expected, slightly lower than what is expected. Are we getting this point? And then it will again start with more addition of base, it will start increasing. The pOH extent will, H plus will decrease further and further, and it will start increasing. So basically ये curvy nature initial जो हमको मिलता है, that is because of this buffer nature, where H plus, the concentration of H plus is getting readjusted in a slightly different manner in order to maintain the equilibrium. Okay. So
let me talk about half equivalent point. Half equivalent point पर क्या हो रहा है? I have added half the volume of base into the solution. ठीक है, 50 ml चाहिए था मुझे पूरा न्यूट्रलाइज करने के लिए, और इंस्टेड हमने कितना ऐड कर दिया है? सो 50 ml मेरा है एसिड, एच है 50 ml of 0.2 मोलर प्लस DOH, अभी तक मैंने 25 ml of 0.2 मोलर पुट किया है. This is going to give me BA and H2. ठीक है, ये कितना है टोटल? 0.1 मोल, सॉरी 10 मिली मोल बोल लो, 10 मिली मोल. ये अभी तक है 5 मिली मोल. ठीक है, सो इसका 5 मिल करके यहाँ पर 5 मिली मोल बचा रहेगा. ठीक है, और ये 5 मिली मोल फॉर्म हो जाएगा. मिली मोल फॉर्म, इज इट ओके? अब बेसिकली हमारे फ्लास्क के अंदर में इस सिनेरियो में आई हैव अ बफर सॉल्यूशन जिसमें HA की क्वांटिटी और BA की क्वांटिटी, वॉल्यूम दोनों के लिए 75-75 रहेगा. कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? 5/75 एंड 5/75. ठीक है, मोलर एंड मोलर. नाउ दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो गया, तो pH as per the equation is going to be pKa plus log salt by acid, which is equal to pKa. Salt and acid का concentration बराबर है, cancel होकर के 1, log 1 is equal to 0. Therefore, pH is going to be equal to pKa. That is why I have said that it's going to be equal to pKa. मतलब क्या हुआ इसका application? This curve can be used to find not only the equivalence point of the weak acid in your flask, but it can also be used to find the pKa of the acid by knowing the half equivalence point. Am I making sense? Is it okay? बात समझ में आ रही है हम लोगों को? This point, Yes, sir. noting this V2 by 2 can help us to understand, or finding the half equivalent point will not, can help us in order to find the pKa of the weak acid as well. So that is a benefit which we are deriving out of, the extra benefit which we are deriving out of this sort of titrations. ठीक है, प्लस यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में, यहाँ से इस पूरे कर्व में यहाँ से यहाँ तक the solution is going to behave as a buffer solution. Okay, and buffer capacity सबसे ज्यादा maximum कहाँ रहेगी? It is going to be somewhere close to this. ठीक है, इस जोन में buffer capacity is going to be the maximum, क्योंकि pH is becoming equal to pKa. That means salt and acid का concentration बराबर है, and इसकी वजह से
maximum buffer capacity will be around this point, half equivalence point. ठीक है ना? That I have discussed already last lecture में. Maximum buffer capacity will happen at a place when the concentration of acid and salt is going to be equal. Okay. Next variety of titration is going to be uh, तो एक्चुअली ग्राफ जो है वो ग्राफ के नाम पर तो हम ऐसे भी बना सकते हैं. वहां पे वीक एसिड था, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस इन क्लास as inhalant in flask versus weak acid as titrant in burette. Uh, the curve is going to look like it will start somewhere close to 14 pertaining to the strong base in the flask, and सर थोड़ा ऊपर ही. ऊपर मतलब ये नोट करना है तुम्हें. नहीं सर, इसके नीचे वो टाइटल नोट करना बस. Okay. In this case, the equivalence point will again be somewhere over here only, and this is my equivalence point. मुझे ये एक छोटी सी चीज बताओ. Will this zone act as a buffer in this case or not? Can this zone act as a buffer? Will or can, whatever word we might use to or like to use, can it work as a buffer? Will it work as a buffer?
or not? Anyone? फ्लास्क में क्या क्या है? कैन यू गेस? इस पूरे जोन में फ्लास्क में क्या क्या है हमारे पास? That is how you are going to guess whether we have a buffer or not, right? So what all do we have in the flask? We have a strong base, right? And along with it we have a salt with weak acid. Now buffer के लिए हमको चाहिए क्या होता है? Either a weak acid or a weak base. Do we have that? No. Can we make a buffer or can we call that solution a buffer? No, Yes or sir. no? No. ठीक है, यानी NaOH यानी अगर मेरे पास मैं किसी फ्लास्क में NaOH और सोडियम एसीटेट डाल लूं, ठीक है, सोडियम एसीटेट, कैन इट कंस्टिट्यूट अ बफर? डेफिनेटली नॉट. वीक एसिड कहाँ है? ठीक है, बात समझ में आ रही है हम लोगों को? Yes, sir. So could you explain Things how these this is not a buffer again? sorry So could you explain how this is like not a buffer again, like this graph? अरे बिकॉज बफर के लिए हमको क्या चाहिए होता है? वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड. एक चीज तो ये चाहिए होता है, सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, या फिर यू कुड हैव वीक एसिड विथ अ सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस. अब यहाँ पर ये वीक एसिड या वीक बेस वाला कंडीशन कहाँ फुलफिल हो रहा है? यहाँ पर हमारे पास क्या है? वी हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस and a salt with weak acid. With weak acid. None of the criteria is being fulfilled. या फिर दूसरा कंडीशन हमारे पास ये हो सकता है वीक एसिड प्लस वीक बेस का कॉम्बिनेशन. तो ये तीनों ही क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है ना. दैट मींस दिस कैन नॉट बी अ बफर. Yes, sir, got it. ठीक है ना? इट इज नॉट कंप्लाइंग टू द बेसिक डेफिनेशन ऑफ बफर. सो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड कंडीशन अगर हम करा रहे हैं कर्व है भी, तो इनिशियल पार्ट इज नॉट गोइंग टू बी अ बफर. ठीक है, इसके बाद वाला जो जोन है, इसके बाद वाला जोन, ठीक है, दिस हैज टेंडेंसी टू बिहेव एज अ दिस हैज अ टेंडेंसी टू बिहेव एज अ बफर. न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के बाद में ये बफर की तरह बिहेव करेगा. दिस जोन इज बफर. ठीक है, क्यों? न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के पास क्या रहेगा? पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग बेस में कन्वर्ट हो गया है एंड उसके ऊपर से हमने थोड़ा सा वीक एसिड एक्स्ट्रा डाल लिया है. तो अब इस जोन में अगर हम आगे बढ़ते हैं, देन वी हैव बफर सॉल्यूशन. ठीक है, नॉट इन द बिगिनिंग. मेकिंग सेंस? वैसे इसमें एक और प्रॉब्लम होती है, ये वाला टाइट्रेशन हम लोग जनरली करते नहीं है. ठीक है, क्यों नहीं करते हैं उसके पीछे रीजन बता देता हूँ. दिस इज द फर्स्ट टाइट्रेशन कर्व
जिसको कि हम प्लॉट कर रहे हैं एंड आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये होता नहीं है, इसको नहीं कर सकते हैं, देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन टू इट, हम लोग जनरली नहीं करते हैं। द रीजन फॉर इट इज न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के बाद the pH variation is not very sharp. बात समझ में आ रही है? After neutralization point, the pH variation is not very sharp. मतलब final pH of the solution and the equivalence point the pH are by and far not very not differ by large amount. ठीक है? What I'm trying to argue is यहाँ पर जो हमारा pH होगा that is going to be close to maybe 8.5, ठीक है, और final pH जो होगा हमारा that may be somewhere like 5.5 or 6, maybe 6.5, ठीक है, on account of final thing being weak acid it will be somewhere close to 6, ठीक है, यानी the extent of pH variation from my equivalence point to the end point is not very high, due to which uh, we have a very narrow range of weak indicators which can be used, ठीक है। now very narrow range of indicator होने की वजह से the end point of the titration is not very effectively communicated to us. Am I making sense? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में pH का बहुत स्टार्क डिफरेंस नहीं होने से द इंडिकेटर के थ्रू एंड पॉइंट जो आएगा हमको that is not going to be convincingly interpreted, or the changes in the color of indicator is not going to be convincing and very fast, ठीक है। so हमारा end point जो होगा that is going to get carried away or going to get shifted. Am I making sense? The chances of error are going to be more, and hence we avoid doing this particular type of titration जिसमें strong base को flask मिले और titrant को burette, weak acid को burette मिले, ठीक है। so this format of titration is something which is avoidable, we avoid it, we avoid it, ठीक है। मैं टाइप सारे डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें अवॉइड किसको किसको करेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट अवॉइडेबल टाइप ऑफ वी अवॉइड इट के बदले वी अवॉइड दिस टाइट्रेशन, ठीक है। ये भी आपके लिए एक क्वेश्चन है। I mean, and the logic behind it is as the pH of equivalence point and end point not very different, ठीक है, and therefore not suitably indicated that clear. Fifth variety is going to be अभी weak acid के बदले now we are going to put weak base,
we will have weak base as inlet in flask versus strong acid as titrant in burette. So initially flask के अंदर हमारे पास weak base है and then we are adding the strong acid slowly and slowly. ठीक है? So it is going to start from somewhere upward, maybe from here, and यहाँ पर भी initial वाला phase जो होगा, it's going to be something like this, the curvy part, and that is again because of buffer formation. Now this time again we can very easily see that there is a situation where buffer system is being created. The equivalence point is going to be, this is a weak base. Weak base के का salt का hydrolysis हो करके that is going to be acidic salt, and the equivalence point pH is going to be somewhere in this zone. यहाँ के आसपास पर होगा. This will be our equivalence point.
This is going to be our half equivalence point. Equivalence point. This is going to be equal to, this pH is going to be equal to pKb. ठीक है ना, ये वाला जो पॉइंट होगा दिस विल बी इक्वल टू, this pH is equal to pKb. pH is equal to pKb. बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होगा वो हमको इस पॉइंट से पता चलेगा, हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट से. एंड दिस टाइट्रेशन इज वेरी मच पॉसिबल क्योंकि इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट पर पीएच डिफरेंस जो होता है दैट इज शार्प इनफ. सो बेसिकली टाइट्रेंट जब भी हमारा स्ट्रॉन्ग स्पीसीज रहेगा ना, टाइट्रेंट जब भी हमारा स्ट्रॉन्ग स्पीसीज रहेगा, वी आर गोइंग टू हैव दैट टाइट्रेशन effectively taking place, whereas titrant ब्यूरेट के अंदर जब भी हमारे पास वीक कोई भी हो इलेक्ट्रोलाइट, either weak acid या weak base, then uh, those titrations are generally not favorable. ठीक है, generally they, they are not favorable because the pH change between equivalence point and end point are not very sharp. Very sharp मतलब drastic changes, drastic change नहीं होता है pH का between equivalence point and end point. Therefore, weak electrolyte as a titrant in burette is not preferred. ठीक है, whereas strong electrolytes as a titrant in burette is a preferred combination. So अगर हमें वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड को टाइट्रेट करना है तो स्ट्रॉन्ग एसिड शुड कम इनटू ब्यूरेट एंड वीक बेस शुड कम इनटू फ्लास्क. ठीक है ना, आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? The other way round scenario is going to be unfavorable one. The other way round, so this one is favorable one. pH वगैरह कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी होगा तो वी आर गोइंग टू डील एज अ बफर, राइट. ये जोन बफर जोन होगा. मेकिंग सेंस? Yes, sir. बफर के इक्वेशन से हमको pH मिलेगा एंड इधर वाला तो ठीक है, इट इज गोइंग टू बी गाइडेड बाय, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के बाद स्ट्रॉन्ग एसिड एक्स्ट्रा हो जाएगा. स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे ही डालेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड का डिसोसिएशन फुल होएगा एंड उसके अकॉर्डिंग हमको पीएच का वेरिएशन मिलेगा. ओके, और we go to the next page.
फ्लास्क में स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वेरिएशन इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम समथिंग लाइक दिस. Initial variations are going to be straight lines. ठीक है, equivalence point somewhere close to this. pH change after equivalence point quite less, therefore unfavorable set of unfavorable this is going to be our equivalence point. Okay. And the equivalence point is going to be in acidic zone only, because this is going to constitute a yeah, acidic salt hydrolysis. इक्विवेलेंस पॉइंट पर हमारे पास क्या रहेगा? एसिडिक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. ठीक है, ये जोन नॉन बफर जोन रहेगा. इधर हमको बफर जोन मिल सकता है अगर हम कुछ अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा बेस ऐड करते हैं तो ये बफर जोन हो सकता है. दिस इज नॉन बफर जोन. क्लियर? हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट रहेगा, बट उससे कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिलने वाला है. ठीक है, हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट इन सारे सिस्टम्स में रहेगा, बट इससे हमको कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाला है. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? यस. मतलब कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसे पिछले वाले केस में वो पीकेबी दे रहा था या उसमें पीके मिल रहा था, वैसा कोई इंफॉर्मेशन यहाँ से नहीं मिलने वाला है. ठीक है, ऑल्सो ये वाला चीज अगेन हम लोग अवॉइड करते हैं. नॉट प्रैक्टिकली एग्जीक्यूटेबल, नॉट प्रैक्टिकली डन लैब balance point, balance and so
और 7th एंड 8th टाइप जो होते हैं ना, वो दोनों के दोनों ही नहीं होते हैं। कर्व मैं उनके भी बता देता हूँ, बट दे डू नॉट टेक प्लेस, उनको भी हम नहीं करते हैं। ठीक है, दैट इज वीक एसिड as analyte in class versus weak base as Titrant in butane. So we have weak acid and weak acid है, so it's going to start somewhere from here and exactly ऐसा भी नहीं होता है। ये होता है इस तरीके से है ना, जैसे उसमें हम लोगों को कैसा है, इस टाइप का मिला करता था ना, एक भी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, तो ये कर्व जो होते थे शार्प होते थे। वीकर साइड में इट इज गोइंग टू बी मोर, और ये क्या बोलते हैं, कर्वी। It's going to be more curvy when we have a weaker component, and stronger component में this curvature is going to be quite sharp. ठीक है, तो सेम नेचर यहाँ पर भी डिपिक्ट करता है वो। It's going to be less, it's going to be more curvy, less sharp curve on both the sides. Increasing. ठीक है, this is how it is going to look like. The equivalence point will lie very much close to, like, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मे बी इधर लाई करेगा या थोड़ा इधर लाई कर जाएगा, बट नेचर ऑफ कर्व इज गोइंग टू बी लाइक दिस। इसमें भी इक्विवेलेंस पॉइंट एंड एंड पॉइंट का डिफरेंस बहुत शार्प नहीं है, इसकी वजह से दिस वन इज आल्सो नॉट विजिबल। डू नॉट और नॉट प्रैक्टिस्ड इन लैब। ठीक है, ये पॉइंट हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट रहेगा। The last, I mean, it's not the last one, आज के लिए last one.
equivalence point may lie over here or may lie over here will depend. Somewhere in this zone only the equivalence point is going to lie. And this is again not preferable. Not preferable. Preferable titration. रीजन क्या है नॉट प्रेफरेबल होने का? सब में रीजन एक ही होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट एंड एंड पॉइंट pH are not sharply distinct. ठीक है? So no suitable indicator. ठीक है ना? ऐसे सारे प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करने के लिए जो भी लैब में नहीं हो सकता है, देयर इज वन एंड ओनली वन लॉजिक एंड दैट लॉजिक इज दिस. ठीक है? You do not have a suitable indicator. Why? Because endpoint and equivalence point are not sharply spaced or sharply distinct. They are close enough, and hence we do not have any suitable indicator for that. Is it okay? We are going to halt over here for today, and from here we are going to continue tomorrow. We have few